Alright, now we can. What kind of study you doing? Huh? What kind of studies you're doing? What kind of studies? Masters. I'm doing masters in business IT. Business side. Yeah, business IT from RMIT. So I am an international student myself, and we are in Melbourne, Australia, one of the cities that has one of the highest number of international students. When you say international students, the other word that comes in mind is survival. And when you say survival, the next word that comes in mind is part-time jobs. And when you say part-time jobs, then the next word that comes in mind is doing deliveries. Being this delivery rider, doesn't matter if it's burning hot weather out there, doesn't matter if it's freezing cold or if it's raining. Doing deliveries, being this delivery driver is, I think, one of the first exposures in terms of jobs and in terms of earning money for an international student. So I came with my girlfriend. She is a student, so that's why we came here. But me, I have my own company in my country, so I was already working. I tried working here, but I couldn't find anything, so that's why I went up for Uber. Since how long you've been doing this? 3 or 4 months, something like this. And how many days do you usually do in a week? Depends on the mood, I guess, and depends on the mood and also in the weather. Like if it's too rainy or really cold, but usually it's around 5 to 6 times a week. Depends also on the bonuses you get. If I don't have any bonuses in the day, probably I will take a day off or something. If I do get a lot of bonuses all day, then I will do full day anyway if I'm tired or not. I don't get tired because this is depend on me. I can do by myself. I think a lot of students they are choosing to do delivery because they also have another job. So, and delivery also earn a lot of money more than you work in restaurant because it limit to your work only 24 hours in a week. Like so, sometimes you can earn more money in a week more than work in restaurant. It is just freedom. क्या आप लोगों को फीलिंग याद है जब आपने 10th बोर्ड्स को पास करके नाउ यू आर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ, ईदर जूनियर कॉलेज या फिर बैचलर्स करने के लिए यू मूव ऑन टू अ डिफरेंट सिटी, अपने घर परिवार से दूर हॉस्टल में रहने के लिए चले जाते हो, या फिर उसी शहर में नाउ यू मूव ऑन टू अ बिग यूनिवर्सिटी या फिर अ बिग कॉलेज जहाँ पे यू आर नॉट दैट सेम सीनियर जो आप 10th स्टैंडर्ड में जो आप सीनियर थे, नाउ यू आर नॉट द सेम. अब आपके ऊपर आपके सीनियर्स हैं एंड नाउ यू आर द जूनियर. तो कैसे आपके जो सीनियर्स हैं वो आपकी रैगिंग लेते थे. सो दिस इज़ दैट एग्जैक्ट सेम फीलिंग जब एक इंटरनेशनल स्टूडेंट डज द जॉब ऑफ अ ऊबर डिलीवरी ड्राइवर. इतना हम्बलिंग एक्सपीरियंस है ना, मैं बता नहीं सकता. मतलब जब आप गली गली घूमते हो एंड जब आप एक ऐसा काम करते हो जो शायद अपने आपकी ज़िंदगी में भी नहीं सोचा था कि आप करोगे, लेकिन आप वो करते हो. एंड दिस इज़ अ वे ऑफ द कंट्री नॉकिंग यू मेंटली के वेलकम and giving you a taste of what's going to come ahead.
giving you a trailer of all the struggles that you're going to face in this journey. वो कहते हैं ना कि the tip of the iceberg, तो ये है वो tip of the iceberg. Problems और difficulties और बहुत आने वाली है, लेकिन this is just that tip of it. If you do full day, full time every day, probably like 6 times a week, you'll do around $1,000 a week. But also it depends on the orders and the bonuses. So if you're living alone with a cheap rent, and it can be manageable. 1,000 is like the ideal week, so it's not every day. Like my usual is probably around 600 to 800. जिन लोगों को आप पूरे लाइफ एक अलग लेंस से देखते आ रहे थे, आफ्टर डूइंग दिस जॉब मे बी आप उन सभी लोगों को एक अलग ही नज़रिए से देखोगे. देयर इज समथिंग टू लुक बैक टू कि लेट्स सपोज आपने ये कर लिया है, नाउ यू हैव मूव्ड ऑन एंड नाउ यू आर डूइंग समथिंग एल्स. तो आप जो भी इसके बाद करोगे ना, वो आपको बहुत ईजी लगेगा. एंड आपकी जर्नी में इसके बाद जब कोई भी डिफिकल्टी, जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो आप ये बोलोगे कि यार जब मैंने वो कर लिया, ये तो कुछ भी नहीं है. तो मेंटली एज आई सेड, ये आपको बहुत स्ट्रांग बनाती है. एंड वॉक मी थ्रू योर डे, लाइक हाउ डज योर एवरेज डे लुक लाइक? लेट्स से इफ यू डिसाइड द अदर डे दैट यू नो इट्स सैटरडे, everyone's going to order, I'm going to get a lot of deliveries. How do you plan your day and how does your day look like? I get up probably around 8:30, 9:30, depends on how I feel. Take a breakfast, something. I usually eat light, so I only eat breakfast and dinner. Get ready, getting water on my face and things to wake up, and then get on the bike. And usually when I do the deliveries, I put a video like this. Just listen to the video or music or anything. Or anything in the background. Yeah. And while I'm waiting, I'm looking for bench like this and take a rest. Do the whole day. Sometimes we're around 5 p.m. or 4 to 5 p.m. get a bit hungry, so I take a small thing outside, like probably like a cookie or anything I can find for cheap. And yeah, after I finish around 9:30 probably. Depends on if I had a lot of orders or not. If I had a lot of orders and I finish my bonuses, I can go home earlier, so like 8 p.m. And if I don't get a lot of order, I do until 9:30 to 10 p.m. I know कि कोई भी स्टूडेंट ये सोच के तो नहीं आता कि मैं आके डिलीवरी ड्राइवर की जॉब करूँगा. नो वन एक्चुअली थिंक्स ऑफ दैट. पता नहीं कुछ लोग करते होंगे, लेकिन आई नो कि ये मजबूरी में करना पड़ता है. प्रॉब्लम पता है कब आती है? जब ये जो मजबूरी है ये आदत बन जाती है. आप अपने कंट्री को छोड़ के क्यों आए? आप आपके फैमिली, आपके घर से इतना दूर एक दूसरी कंट्री में क्यों आए? बिकॉज यू डिड नॉट वांटेड टू सेटल फॉर लेस. देयर वाज समथिंग जो आपके अंदर एक डिस्कम्फर्ट सा था, जिसको छोड़ के आप अपने बेसिकली आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के बाहर आए हो. अगर आप एक दूसरी कंट्री में आए हो तो अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के तो आए हो. घर छोड़ना, फैमिली छोड़ना, लव्ड वंस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ना इज़ अ साइन कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हो. बिकॉज देयर वाज समथिंग दैट यू डिड नॉट वांटेड टू सेटल फॉर. दैट्स व्हाई यू केम हियर, बिकॉज यू वांटेड मोर इन लाइफ, राइट? तो अगर ये रीज़न है आपके यहाँ आने का, एंड यहाँ पे आके आप वही कर रहे हो, आप वही वापस अपने कंफर्ट जोन में जा रहे हो, आप यू आर अगेन सेटलिंग फॉर लेस, तो क्या ये साइकिल रिपीट नहीं हो रही है? देन लीविंग योर कंट्री बैक एंड कमिंग टू अ न्यू कंट्री डज नॉट मेक सेंस, बिकॉज आप वही कर रहे हो जो आप अपने पास्ट लाइफ में कर रहे थे. व्हेन अ स्टूडेंट कम्स हियर, ही स्टार्ट्स हिज लाइफ अगेन, या फिर एक नई लाइफ की वो शुरुआत कर रहा है. तो अगर आपने अपने नई लाइफ में भी वही मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हो जो अपने पास्ट लाइफ में कर रहे थे, तो ये माइंडसेट से मुझे प्रॉब्लम है कि सेटलिंग फॉर लेस माइंडसेट. ठीक है, मैंने कहा कि ये एक्सपीरियंस, ये जो जॉब है ये सबको करनी चाहिए, बट जस्ट फॉर दैट एक्सपीरियंस मैंने आई थिंक 2 दिन किया होगा, सिर्फ 2 दिन, वो भी बिकॉज मुझे वो एक्सपीरियंस लेना था. बट उसके बाद मेरे घर में अभी भी वो ऊबर बैग पड़ी है ऊपर, एंड वो पड़ी है, उस पर धूल लगी हुई है, एंड आई डोंट नो क्या हाल हो रहा है उसका, पर वो वहीं पे है. इट्स जस्ट देयर, इट्स जस्ट सिटिंग देयर. एंड मैंने अपने आप को ये बोला कि
चाहे 1 महीने तक मुझे कोई जॉब ना मिले, नो प्रॉब्लम, आई विल स्टिल बी फाइटिंग एंड आई विल स्टिल बी ट्राइंग टू गेट अ बेटर जॉब, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा. I have one experience of like scary thing is that I was on the bike and I was cruising and I had my blinkers on the left and there was a bike behind me and I guess he didn't see me have the blinkers on the left, so when I tried to take the turn to the left, he ran into me. Like we both apologized, like I should have maybe say more. जब आप ये जॉब करते हो, यू आर एक्चुअली वेस्टिंग अ लॉट ऑफ योर पोटेंशियल टाइम एंड एनर्जी, बिकॉज ये जो 2 साल आप स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, 2 साल 3 साल 4 साल, डिपेंड्स ऑन कि आपकी क्या डिग्री है, ये 2 साल आपके पास टाइम है टू बिल्ड योर CV, टू डू मीनिंगफुल जॉब्स, क्योंकि आप पास आउट होने के बाद, ग्रेजुएट होने के बाद यू विल बी लुकिंग फॉर जॉब्स, राइट. लेकिन वो जॉब्स मिलने के लिए आपने पहले कुछ तो किया होना चाहिए इन ऑस्ट्रेलिया या फिर जहाँ पे भी आप रह रहे हो. ग्रेजुएट होने के बाद अगर आप अपने एम्प्लॉयर को, रिक्रूटर को ये बोलते हो कि मैंने 2 साल ऊबर किया है, क्या आप ये बोल पाओगे कि आपने सिर्फ डिलीवरी जॉब्स की है? आप बोल भी नहीं पाओगे, बिकॉज यू नो दैट इट डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू, इट डज नॉट होल्ड एनी मीनिंग. तो ये जो 2 साल का आपका टाइम मिल रहा है, यूज़ इट टू डू मीनिंगफुल जॉब्स, बिकॉज ये 2 साल आपसे कोई नहीं छीन सकता. यू हैव दैट 2 years इन योर हैंड. डोंट फोकस ऑन अर्निंग मनी. पैसा आप बाद में भी कमा लोगे. येस, आप यहाँ पे पैसा कमाने आए हो, लेकिन पैसा कमाने ये जॉब से करने आए हो नहीं. पैसा तो आप बाद में भी कमा लोगे यार. येस, ऊबर, पैसा, ये सब बहुत ही शॉर्ट टर्म गोल्स है, बहुत ही शॉर्ट टर्म डिज़ायर्स है. फोकस ऑन लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फोकस ऑन कि आप आगे जाके इससे आपका कुछ फ़ायदा होगा कि नहीं. So I think as Australians, you can find a job pretty easily because a lot of people, a lot of stores, a lot of things. But as Immigrant, yeah, like as an outsider. yeah, outsider. Like an outsider, you don't find a job as easily as an Australian. It's quite hard because I did a lot of interviews. I put a lot of resumes everywhere. I went to everything. Like I went to stores, I went to restaurants, went to like private events. But as it's my first time here in Australia and I didn't work anywhere yet. Nobody was like giving me a real chance Because of no experience. yeah, but I do have a lot of experience, but Just because you're not Australian. yeah, I do have a lot of experience and I have a like big resume, but not anything in Australia. Yeah. Okay. So yeah, whether I put in the work or not, I didn't really have a chance. The few interviews I had went really well, I think, but the people told me that they would rather have someone with a similar experience, but with Australian experience also. एंड ये जो थॉट है ना कि चल तो रहा है यार काम, क्या ज़रूरत है कोई और जॉब ढूंढने की, आ तो रहे हैं पैसे, अपने मर्ज़ी से काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, जब करना है करो. यही थॉट से आपको दूर भागना है. ये थॉट अगर आपके दिमाग में बैठ गया ना, तो मैं बता रहा हूँ आप लोग को, बिकॉज आप अपने कंट्री को छोड़ के ही इसलिए आए थे बिकॉज यू वांटेड मोर, यू डिड नॉट वांटेड टू सेटल फॉर लेस. यू आर नॉट ओके विद बीइंग ओके. आप जो अपने माँ बाप के पास रहते, कमा रहे थे आपके माँ बाप, आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा था, आप चैन से छत के नीचे सो रहे थे, एवरीथिंग वाज फाइन, लेकिन यू चोज टू नॉट कंटिन्यू दैट लाइफ. यू चोज टू get more out of life. You wanted to do something meaningful, to do something valuable. ऐसी कुछ चीज़ जो आपके फैमिली में शायद किसी ने भी नहीं की. You chose to come out of that comfortable life and choose this life of discomfort. Eventually जो आपको एक स्टेज पे लेकर जाए. आप लोगों को समझ रहा है ये चीज़? तो इस माइंडसेट से बाहर निकलना. अगर आप इस माइंडसेट से जीने लग गए तो आप शायद आपके 2 साल के मास्टर्स, बैचलर्स के बाद भी आप इसी माइंडसेट के साथ रह जाओगे एंड आपको हैबिट हो जाएगी ऑफ सेटलिंग फॉर लेस. आप फिर कुछ भी काम करने लग जाओगे जस्ट बिकॉज यू वांट टू सर्वाइव. तो ये द माइंडसेट ऑफ जस्ट बिकॉज यू वांट टू सर्वाइव यू विल डू एनीथिंग, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक. तो मैं इसी थॉट के साथ ख़त्म करूँगा कि समटाइम्स सेइंग नो टू द थिंग्स दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू इज़ ऑटोमेटिकली अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर द थिंग्स दैट इज़ एक्चुअली गुड फॉर यू.
Take care.